First of all, my compliments and also to the composition of this platform, the group. These days hybrid models are a bit controversial, but your model, I think, is corporate, academia, media, Digital. and practitioners of diplomacy and military and security strategists. So I think this is a good platform. Secondly, a lot has been said here. Very useful suggestions have been made. I think what your think tank, because keeping in view the mushrooming of think tanks in Pakistan, somehow you have to have an edge over others in the sense that whatever you produce or whatever your deliberations are, they should be of, good quality, value addition, and contribute to the facilitation of policy making and policy formulation. That is important. It should be brief, it should be targeted, your policy briefs, and workable solutions. Of course, there is a lot of research ongoing in universities and institutions. जैसे आपने कहा कि पेपर्स लिखे जाते हैं, हमें भी बहुत आते हैं, उसमें से कुछ पढ़ लिए जाते हैं, कुछ नहीं पढ़े जाते. लेकिन ये कि उसका executive summary and policy brief, so that whatever you are giving to the government, you are coming out with, makes sense and catches the eye. आपने बात की कि ये किस तरह formulation होती है, policy making में. I recently read a book by Rush Doshi, The Long Game. And he has been with the NSC in United States. And if you read the content of that book, it's a very well-researched book, and he's a sinologist also, and he has some inside information also. So whatever he has written has been imbibed as a policy document in the national security strategy. He has basically provided a template for the US administration to whatever policy is being followed. So this is how the policy is formulated, in those countries which have an upper hand. अच्छा. दूसरी चीज़ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे यहाँ तो, सॉरी टू से दिस, मेरे ख्याल है कोई ब्लास्फेमी में ना कर दूँ, हमारी तो लीडरशिप शायद इतनी निटी-ग्रिटी में नहीं जाती. यहाँ पर लैंग्वेज और वो बेचारे डिप्लोमेट्स ही होते हैं, मेरे और सोहेल साहब जैसे और एजाज साहब जैसे, जो न्यूयॉर्क में खप रहे होते हैं जब नेगोशिएशंस हो रहे होते हैं कॉमर्स में और फुल स्टॉप्स पे. आई एम रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग बुक बाय दिस एंड्रयू स्पॉन. ये अभी आई ये किताब, न्यू लिमिट्स. उसका भी मैंने शुरू किया है. उसने एक जगह पे जिक्र किया है कि यूरोपियन यूनियन में जब ये वो डिबेट हो रही थी इंटरनल काउंसिल्स में, इनर काउंसिल्स में, कि चाइना को किस तरह डिस्क्राइब करना चाहिए, सो दे केम अप विद अ फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर आई थिंक. उसके ऊपर लीडर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन स्पेंट आवर्स एंड आवर्स, एंड देयर वाज डिसएग्रीमेंट कि हमें ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए एट द लीडरशिप लेवल. So this is how, perhaps our think tanks work with that kind of commitment and intensity here, not elsewhere, not in other quarters. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी उम्मीद है आपसे, because you have a very rich experience of diplomacy as a foreign secretary, as ambassadors in key capitals, and then you were heading the Institute of Strategic Studies, which is, a great experience in your case. And of course, with all the luminaries here on this table, I think there is a merit in the suggestion, which was just made, that instead of spreading yourself too thin, your themes are very good: geopolitics, geoeconomics, governance, and environment. But just focus on one particular theme, which is sort of, well, all these themes are important for us, for Pakistan, क्योंकि हमने तो बहुत बिगाड़ कर लिया है ना, तो हमें बड़ी चीज़ों पे ज़रूरत है कि हम फोकस करें. लेकिन अगर हम इस पे आप एक नीश बना लें किसी के ऊपर,
बेशक अगर इन्वायरमेंट की आपने लेना है, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग थिंग एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, उसको अगर करना है उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए. एंड आई फुली, बिकॉज आई हैड जॉटेड डाउन दिस पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो सुहेल साहब ने कहा कि यूथ को एंगेज करें, क्योंकि दे विल कम अप विद वेरी इंडिपेंडेंट आइडियाज़. वी आर ओल्ड फोगीज नाउ. एट टाइम्स आवर आइडियाज़ वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी वेरी sort of outmoded also. लेकिन उनको इन्वॉल्व करें, उनसे सुने, उनसे डायलॉग करें, और उस पर फिर ये जो है किसी पॉइंट पे माई कॉम्प्लीमेंट्स एंड माई वेरी बेस्ट विशेस टू थैंक यू सर.